Hello there. So in this tutorial we will talk about an open source project management tool named OpenProject. So before we get started, I would like to introduce one of my project member, Ehtesham. So let's start from the introduction to the OpenProject. Get your project done. The project leading project management software, OpenProject connects team and enables them to work together. Worldwide active community continuously developed to open source software. Use OpenProject simply and securely in the cloud without installation or operating effort. Or install and self-administrate it on your own server. OpenProject provides data protection and security are its top priority. OpenProject support features both traditionally and agile project management. Navigate complexity of the project intuitively and precisely. Prioritize any task or assign any task. Gather feedback and comment. Track all the progress. All these information are centrally in one place. Plan your project with the help of Gantt chart. Manage dependencies. Also overarching view. Create a wiki together and share information in documents form. There is also an agile board to easily visualize and prioritize your daily tasks. OpenProject helps to track spending time and cost and monitor your budget and status and dashboard. As we discussed earlier, that OpenProject is an open source project management tool that provides a wide range of features like project planning, task management, time tracking, team collaboration, product roadmap, project portfolio, workflows, and agile methodologies to help you to complete and manage your project more effectively and efficiently. After that, we will look the introduction to the PMBOX, the project management body of knowledge. It is a book to guide you to provide a standard framework of project management. Its latest version is 7th edition and released in 2021 by PMI, Project Management Institute, Global Community of Project Management. It defined terms, standard, and good current industry's practice of project management. Its guideline divided into 12 project management principles, 8 performance domain, model, method, and artifacts. What are the 6 steps to get started with your team in OpenProject? Once you have logged into your application, you see the home screen with an overview of important information. First, you can choose the existing project you want to work on from your project drop-down menu. Or, if you are administrator, you can create a new project. Just select New Project, choose the name of your project and click Create. Second, you can add members to your project. Navigate to the new member module. You can add existing member to the project. Or you can invite new user by typing their email address. Assign a certain role to the project and click Add. Third, and you work to the project and the work packages module. This can be anything you want to track within a project. For example, task, feature, bugs, user stories, risk, or ideas. You can create new work packages directly from the list. Or you can choose create and select the type of work you want to add. Enter the title and the description. Add files and drag and drop or copy paste. Assign it to the team member. Double click on the row and click on the info icon and it will open the details. You can resend activities and add comment in the activity tab. Also, you can notify member and add notation. Or add watcher to keep him informed about updates. The fourth step is to create a project plan. Active the Gantt chart for you and drop down menu on the top of the work packages. Create phases and milestone directly in the Gantt chart. And update it with drag and drop. Add dependencies with a right click and choose predecessor or followers. The fifth step is to filter, group, and save your list depending on your needs. For example,
All tasks assigned to me are a feature with priority high and so on. Add or remove columns. You can activate and deactivate the Gantt chart for each view. Save a report, add your project menu and make it visible to other project members. Organize your team. You can create various agile boards. Go to the board and click board, choose the type of board you need. Add to the list you need to the board, for example, new progress done. Existing work can be added to the card, or new one can be created within the list, moving the card. For example, a Kanban board with a status column. For example, status and clicking the icon and show the detail. This is everything you need to get started with an open project. Get your project done with OpenProject. So up to now we just learned that there are 6 steps to get started with OpenProject. Create a project, add team members, create work packages, create a project plan, and filter group and generate report, and the last one is create an agile board. After that we will look the analogy of OpenProject with PMBOX. After the personal experience and by the given feedback by people, we are able to get to know that there is a limited support for agile project management methodology. The integration of such module with Gantt chart does not work formally and have to manage all the things manually, due to which it would not show the progress of version user stories and tasks automatically, but you have to manage it manually. And the second point is lack of formal integration with resource management. Resource management is a bit burdensome with OpenProject. No resources status notification, don't know if they are reserved or are available. So there is no such notification or status, so by which we know that the resources are available or reserved. The third point is task management and team collaboration. OpenProject provide a feature like time management and provide the active collaboration to your team, or you can assign any task and see their progress. So the OpenProject provides such a good features by which you can track your team and see the progress you have done. Artlist.io. So there are 8 performance domains according to the PMI, in which there are stakeholder, team, software development, approach and life cycle, planning, project work, delivery, measurement, and the last one is uncertainty. So as a project manager, for effective delivery of a project outcome, we need to keep in mind all these group of related activities. After that, we will look performance domains with PMBOX. So we just compare the PMBOX book and our project or tools OpenProject. So OpenProject virtually support all the performance domains, like it provide a feature of stakeholder management, actively engage and communicate with stakeholders. It also provide the opportunity to manage or build your team, or you can choose various software development life cycle like agile and Kanban methodology, and can plan and coordinate your work. And also you can manage the resources, time, cost and risk, and can also track and measure the progress of your project, so that you can deliver your system in a given budget and time. Now we will look each performance domain with PMBOX with more depth. So the first one is stakeholder management. So OpenProject offer several features to manage stakeholder in a project, to allow project manager to identify and prioritize stakeholder based on their role and responsibility in the project. Also on the engagement and criticality of any task assigned to him, and the importance of their task and stakeholder to the project. The second point is OpenProject also have the capability to invite stakeholder and assign them any task and role. And OpenProject include various communication and collaboration features to facilitate stakeholder engagement.
by using message board, forms, and wiki to share project updates, announcement, and discussion. Stakeholder can also collaborate on task upload, documentation, and participate in project-related discussion. The second performance domain is team management. Open project manage team through user management by assigning him a role and permission to each team member. Uh, Open project manage a team by assigning them any task and role and set date and prioritize their task and team member and add dependencies. Also, it manage team by provide him a feature like to communicate with their team by utilizing message board, forms, and wiki for team communication and sharing for project updates. It also provides a feature for notification reminder to receive a notification and reminder to keep a team member informed about any task, assignment, and deadline. It also track the time, cost, and budget by through which the project manager noted how many progress is written by each team member. The third performance domain is development approach. So Open Project allows an agile development approach which emphasizes an iterative and incremental development, collaboration, and flexibility in the project execution. By break down the project development into iteration or sprint through WBS, it also supports an agile planning technique such as backlog management, and Open Project offer Kanban board and Scrum board to visualize and manage work items. It also supports the traditional project management. And the fourth performance domain is planning. So planning an open project involved defining a project goal to identify the desired outcome and deliverable that need to be achieved. And open project also provide by through planning by breaking down any task or action to the actionable task by break down the project into smaller and manageable tasks by WBS, and assigning the resources, setting timeline and time tracking progress by monitoring resource availability and workload, and also by using the Gantt chart to visualize the project timeline and task dependencies. And the next performance domain is project work. By using task management, open project support project work and provide such a feature as a universal aid and a different task view and issue management. These features allow from the quick and easy creation and tracking of tasks and issues, and ensure that all important tasks informed and easily accessible. And assigning each task to the public so that every team member should be able to view their task. The next performance domain is delivery. So Open Project provides several features and functionalities to support the delivery phase of a project, like task completion, release planning, and report. And task completion, team member can update the status and tasks as they are completed. And release planning, Open Project provide a feature such as Gantt chart and agile board to help and plan and schedule the release of the project deliverable. And while in reporting, report can be shared with stakeholder to provide the visibility into delivery progress. Providing such feature, the project manager get to know each task parameter and the progress of the overall project. So the next performance domain is measurement and uncertainty. So Open Project provide a measurement capability to help track and analyze the project progress, performance, and key metrics. Here is the main feature and functionality in Open Project that support measurement. For example, task tracking. Open Project allow the team members to track their progress of individual tasks. They can update the status of their task, mark it as a complete, and also support the feature of time tracking. Open Project include time tracking functionality to enable team members to log the time they spend on each and individual task. It also monitor the progress. Open Project provide a visual indicator and progress bar to track the completion of task and status, work packages, and overall completion of the project. It also support the Gantt chart, interactive Gantt chart to visualize the project timeline, task dependencies, and milestone.
Gantt chart help the progress of tasks, identify and delays a potential issue in the project schedule. Uh, the next performance domain is uncertainty in a project. So uncertainty is something that is uh, unplanned. The event that is unplanned. Uh, Open Project recognize that uncertainty is a common aspect of project management. It cannot entirely eliminate the uncertainty, but provide tools and features that help project manager and team to manage and address the uncertainty effectively. Here, how Open Project handles the uncertainty by risk management. Open Project include feature to manage project risk. User can identify and document risk, assign risk owner, assess like their likelihood and impact, and define the migration strategies. Will help and proactive addressing potential uncertainty and minimizing the impact of that risk on our project. It also support to track the issue and manage project issue or problem that arise during the project life cycle. Issue can be reported, assigned, and tracked until resolved. This helps in capturing and addressing the uncertainty that may impact the project progress or quality. It also supports change management. If there are any change occur in the process, user can document and track that change to the project scope to ensure that uncertainty arise from the change are properly managed and communicate to the relevant stakeholder. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम एहतेशाम सैप ID 11643। हमारा जो टॉपिक था सर वो ओपन प्रोजेक्ट है। इसका सर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन जो उनसे वो मोहम्मद इस्माइल ने दे दिया। इसमें सर मोहम्मद इस्माइल ने अपना पार्ट जो उनसे वो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है वो है न्यूज़। जो न्यूज़ का फीचर है सर ओपन प्रोजेक्ट टूल में, वो बहुत ही किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमने कोई भी प्रोजेक्ट हमारा उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है तो वो हम इस वाले पोर्शन में ओपन प्रोजेक्ट टूल में रखते हैं। न्यूज़ जो सर होती है कोई भी रीसेंट प्रोजेक्ट से अपडेट होती है वो हम शेयर कर सकते हैं। इस पे जो टीम मेंबर हैं उनको हर वक्त इन्फॉर्म करें। कोई भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट या कोई भी अनाउंसमेंट किसी भी किस्म की आती है तो हम उससे रिलेटेड उनको गाइड करते हैं। और जो सर ये न्यूज़ को यूटिलाइज करके जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है वो कम्युनिकेट कर सकता है कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड जो उनसा कोई भी टॉपिक होगा उससे। जैसे फ़र्ज़ किया कोई भी हमने माइलस्टोन अचीव करना है, कोई अपकमिंग इवेंट है, इम्पोर्टेंट डिसीजन है या कोई भी नेटवर्थ इंफॉर्मेशन है वो हम इधर एक्सप्लेन करते हैं। और सर इसमें ये जैसे हम न्यूज़ ऐसे क्रिएट करते हैं कि अगर हमारा कोई न्यूज़ नहीं होगी तो देयर इज़ करंटली नो न्यूज़ टू रिपोर्ट पहले आ जाता है। तो अगर फ़र्ज़ किया हम कोई न्यूज़ ऐड करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका टाइटल आता है वो यार एक्सीडिंग अवर बजट। तो सर उसके बाद नीचे ऑथर का नाम आता है जिसने वो न्यूज़ शेयर की होती है। जैसे एहतेशाम जाट ने ये शेयर किया। नेक्स्ट जो सा उसके साथ डिस्क्रिप्शन होती है। ये बेसिकली सर एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती है। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते क्योंकि अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी न्यूज़ हो जाएगी, कोई इतना फोकस नहीं कर सकेगा इसमें। उसमें फिर हम उस केस में सर हम आगे डिस्कस करेंगे। वो हम मीटिंग जो उनसे वो रख लेते हैं, मीटिंग किसी भी जगह पे अगर हमारा कोई बहुत ही ज़्यादा काम एक्सीड कर रहा है। इसमें सर ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में सर एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम जो उनसे बजट से एक्सीड कर रहे हैं तो जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूटिलाइज करें, क्वालिटी जो उनसी अच्छी रखें। तो उसके बाद सर इसमें जो होता है न्यूज़ पेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो हम शेयर कर सकते हैं। किसी कोई भी मतलब हमें कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वो क्लियरली हम शेयर कर सकते हैं। सारी इट बेसिकली एक्ट एज अ सेंट्रल हब वेयर टीम मेंबर कैन एक्सेस एंड स्टे अप टू डेट विद लेटेस्ट प्रोजेक्ट न्यूज़। उसके बाद सर आ जाता है बजट। बजट सर जो उनसे है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। जैसे हम सर कोई वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है उसका हम सबसे पहले बजट जो उनसे वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ये रिक्वायरमेंट दी है, इसके अगेंस्ट इतना बजट जो उनसे
आपका बनेगा ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। बजट जो सर बेसिकली काफ़ी हद तक रिलायबल इस वजह से होता है क्योंकि इसमें सर हम मुख्तलिफ जोन सी अप्रोचेज जोन सी वो यूज़ करते हैं। मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स होती है सर, जैसे टॉप डाउन हम यूज़ करते हैं या बॉटम अप जोन सी है ये हम यूज़ करते हैं अप्रोच इसमें। इसके बाद ये सर बेसिकली जोन सा बजट है वो हम अर्ली स्टेज पे जोन सा है वो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको सर कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ बजट को मेथड हैं, जैसे मल्टी पॉइंट एस्टिमेशन हो गया, पैरामीटर एस्टिमेशन हो गया, एक्सपर्ट जेनरिक एस्टिमेशन हो गया। इसी तरह सर बजट जोन सा है ये इसमें दो किस्में आ जाती हैं, जैसे प्लान यूनिट आर आ जाता है और लेबर आर आ जाता है। बजट में सर यूनिट आर यानी कि जो हमारा एक पूरा यूनिट होगा उसके अंदर फर्ज किया जितने भी लेबर काम कर रहे होंगे उन काम फिर ये दोनों कैलकुलेट करते हैं। जैसे सर इस वाली स्लाइड में हमने जो उनसे हर इन दिस वी असाइंड वर्क आर टू स्पेसिफिक मेंबर अगेंस्ट द नेम। जैसे कि फर्ज किया सर हमारा कोई भी यूनिट है, यूनिट को हमने 5 यूनिट बना डिवाइड किया हुआ है 5 यूनिट में ब्लॉकचेन के सिर्फ काम को, तो उसमें सर हमने टोटल बजट जो है वो 500 रखा है और ये सारा सर डिवाइड हो जाएगा जो उसके अंदर रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज होंगे, जो हमारे लेबर उसमें या जो हमारे साथ मेंबर काम कर रहे होंगे वो होंगे। इसमें सर ये जैसे दूसरा मैंने आपको बताया था तो ये आ गया सर हमारा लेबर का। लेबर में सर बेसिकली हम जो है कि कोई भी हमारा जो मेंबर होगा या एम्प्लॉयर जो भी हमारा होगा उसके हम आर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसने किस किस्म का काम किया, एक टाइप उसकी होगी और यूज़र नेम होगा वो हम उसको कैलकुलेट करके उसका बजट जो है उसको दे देंगे। उसके बाद सर आता है टाइम और कास्ट। टाइम जो सर स्पेंड किया होता है मेंबर ने उसके मुताबिक जो उसकी कास्ट होती है अर्ली पेड हम उसको करेंगे कि मतलब फर्ज किया एक आर का 10 यूरो है तो 6 आर के 60 यूरो हो जाएंगे उसके। तो इसमें सर जैसे ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ स्क्रीनशॉट पेमेंट मॉड्यूल जो है इस तरह हम और भी काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल जो है वो हमने डिवाइड किए हुए थे, बनाए हुए थे। तो ये 38 नंबर जो हमारा पेमेंट मॉड्यूल है इसमें एक जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने वीक 2 में जो उनसे 6 घंटे काम किया हुआ, ये टाइम हमने जो उनसे सर कैलकुलेट कर लिया। तो बाद में आ जाता है सर लॉगिंग टाइम। इसमें सर बेसिकली जो उनसे टीम मेंबर है वो अपना जो लॉग टाइम होता है वो जो उनसे वो इंटर करता है, उसकी डेट होता है या उसका एक्टिविटीज़ होती है जो उसने वर्क पैकेजेस लिए होते हैं वो होता है। उसके बाद आर होते हैं कितने आर उसने काम किया है, ये बेसिकली सर कैलकुलेट होता है ऑन द बेस ऑफ आर। जैसे ही सर हम इसको सेव करेंगे तो वो ग्राफ जो उनसे हमें पीछे शो हो रहा है उसमें सर ये सारा डिटेल इंसर्ट हो जाएगी, उसको शो हो जाएगा कि कितने घंटे काम किया और किस किस्म का काम किया और एक्टिविटी क्या उसने परफॉर्म की हुई है। उसके बाद सर जो लेबर की कास्ट होती है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए ये सर हमें फ़र्ज किया बजट उन्होंने दिया हुआ था 2 लाख कंप्लीशन के लिए, कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को 2 लाख उन्होंने बजट दिया हुआ था। तो सर उसमें हमने जो प्लान्ड वैल्यू हमने कहा था कि फ़र्ज किया हम 1 महीने में 45% काम कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल कास्ट हमने देखी 1 महीने बाद तो वो आई 30%। तो उसके बाद सर हमने फिर ये एक्चुअल कास्ट से कैलकुलेट किया डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कास्ट उसको यूज़ करके उस फार्मूले को यूज़ करके हमने देखा कि हमारा 70,000 हो रहा है। 70,000 जो उनसे 1 महीने के बाद वो ह्यूज डिफरेंस इन आवर कॉन्फ्रेंस। सर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था प्लान्ड वैल्यू और एक्चुअल जो कास्ट है उसके दरमियान। तो सर उसके बाद जो उनसे हमारा आ जाता है कि हमने जो उनसी CPI जब हमने कैलकुलेट की तो वो आ रहा था 0.86%। तो सर उसको फिर हमने डिवाइड किया अपने टोटल बजट के साथ, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 2,32,558। तो इसमें सर हमने वेरिएंस एट कंप्लीशन देखा तो वो सर हमारा आ रहा था तकरीबन 32,558 रुपये। तो सर हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि हम बजट हमें कितना है, बाद में हमारी जो एक्चुअल कास्ट आएगी वो कितनी होगी। इसमें सर ये प्लान्ड और एक्चुअल कास्ट होती है। प्लान्ड जो कास्ट होती है वो सर हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस की होती है कि इतना इतना हो सकता है आए,
उसके बाद जो एक्चुअल होती है वो बाद में हमें शो हो जाती है कि एक्चुअल हमारा जो उनसा खर्चा है, जो भी रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज किए हैं, जो भी जितना भी काम किया उस पर टोटल खर्च जो उनसा होता है वो फिर हमें एक्चुअल में शो होने लग पड़ता है इधर। उसके बाद इसमें नेक्स्ट फीचर जो उनसे सर वो है मीटिंग का। मीटिंग में सर हम कोई भी मेन एजेंडा या हमने कोई भी किसी भी किस्म का कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो हम वो मीटिंग में सर डिस्कस करते हैं। जैसे कि सर मीटिंग की कोई मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मीटिंग की लोकेशन होगी, मीटिंग किसके मुतालिक है, कौन जो सी अटेंडीज इसमें कौन है और किस टाइम पे होगी, तो ये सारा कुछ जो सी सर मीटिंग जो सी हम उधर कर सकते हैं अरेंज कि हम जूम पे मीटिंग करेंगे या फिजिकल होगी या ऑनलाइन होगी, जिस तरह भी मीटिंग होगी। मीटिंग में सर बेसिकली हम जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उससे रिलेटेड एक स्टार्ट में भी मीटिंग कर सकते हैं, एक सेंटर में भी हो सकती है। सेंटर में इस वजह से, स्टार्ट में इस वजह से सर कि हम उसमें रिक्वायरमेंट जो सी हैं वो हम जो सी हैं मेंबर जो उनसे हमारे मुख्तलिफ होंगे इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले उनको अच्छी तरीके से समझा सकें। मिड में इसलिए होगी कि सर हम उनका काम चेक कर सकें, प्रोग्रेस उनकी चेक कर सकेंगे, वो किस हद तक काम कर रहे हैं, अपने माइलस्टोन को अचीव कर रहे हैं या नहीं। ये किस्म का सर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ही इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा पूरे का पूरा कि, और उसके बाद सर फाइनल में आ जाएगा, फाइनल में हम चेक कर लेंगे हमारा कितना काम हो गया। और उसके बाद सर जो एक्चुअल कास्ट में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, उसमें यह भी है कि सर जैसे फ़र्ज़ किया हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो सर उसको बजट हम पहले बता देते हैं कि इतना आएगा, तो ये बाद में सर अगर हमने इसमें कोई चेंजेस करनी है तो हम सर उसको जो उनसा हमारा कस्टमर होता है उसको हम बताते हैं, उससे डिस्कस करके फिर आगे पॉइंट हम जो उनसे एक्सप्लेन करते हैं। आगे सर कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में सर यही है कि इस प्रोजेक्ट हमने जब ओपन किया उसको रजिस्टर्ड किया, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसमें सर टीम मेंबर जो उनसे हमारे साथ जो इस वो स्टॉप हो गई थी सर। इसमें सर हम नेक्स्ट जोन से वो डिवाइड करते हैं जो काम है वो डिफरेंट मेंबर के दरमियान, और उसके बाद जो मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं वो इंक्लूड करवाते हैं, और हम मेन जो फोकस करते हैं वो बोर्ड पे अपने करते हैं जो हम यूज़ करते हैं इस टूल के अंदर। और उसके बाद एस्टिमेटेड जो बजट होता है हमारे प्रोजेक्ट का वो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी प्लान्ड और एक्चुअल जो कास्ट है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सर ओवरऑल हमने इस टूल को पूरा यूज़ किया एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके, तो उसमें हमें काफ़ी सारे मतलब हमें हेल्प मिली है, हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि किस तरह प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, किस तरह प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर हमें कोई चीज़ें ऐड करनी है, रिमूव करनी है या कोई न्यूज़ अपलोड करनी है तो वो सारा हमने ये सारा कुछ देखा है इसमें।